Okay, so this evening we're a little bit late getting started, and we had the afternoon at the National Museum and a Shokan pillar, so that yeah, it's quite going to the Buddhist section and paying respects to the relics of the Lord Buddha. This is a very special opportunity for us all, I'm sure, but for me personally, very it's very, and honestly, the opportunity to pay respects to the relics is very touching to me, or inspiring, moving. I actually do a relic puja every morning as a part of my practice. It's just a recollection of the power of the symbols of the Buddha, of the Dhamma, the Sangha that have carried on through ancient times through to now, and it has the Buddha himself said to take his ashes and divide them up, make these jetties and make them into places of worship, and not so much worship but recollection. And I think that's important, that they're having something tangible to recollect, that there is this connection to the past, because the Buddha's 2,561 years since he passed away. It's easy for things to slip away, and so to make a conscious effort to have tangible objects that help to remind us of that, and that because when we do pay attention to the past, we can learn from it, and that if we long for the past, or bemoan the loss of the past, oh, the good old days. It's that's not a very useful way of doing, but that sense of bringing to mind those wholesome, special beings, wholesome qualities that have the opportunity to affect us and change us. And of course, then being in the museum where you're surrounded by all these artifacts of different eras of Indian history. It's for me, I grew up in Canada. Not much history in Canada. I've spent the last 20-odd years living in California. Canada is steeped in history compared to California. It always sort of there's the town where the nearest town to the monastery where we go on alms around is it's a fairly small town by anybody's standards, anyways, we go on alms around once a week, and there's one of the shops there, this big sign, really established since 1997. It's got all this history. It was a different kind of scale.
So Buddhist history, Buddhist Indian history is just so layered and rich. So to be able to be there and to recollect how do we direct attention toward the past so that we benefit, because that's certainly, as I say, like that's part of my daily practice. Beginning my day is doing a relic puja and recollecting all of the reminders of the presence of the Buddha, Dhamma, and Sangha. So the relics, images, chedis, Bodhi trees, all of these things. I mean, it's to me it's uplifting. Other people might find it, well, that's kind of weird, but it these are skillful ways of directing attention. And then today, being at the Ashoka pillar, where just recollecting the content of and the intention of King Ashoka to establish the principles of Dhamma and trying to put that into a society, a culture, trying to steep his ministers and civil servants in the duties of looking after the population, and it's very inspiring. It's a in terms of, I'm sure India is affected or takes on the models of modern neoliberal economic and governing models, which basically every person for themselves. It's not a beautiful model, and doesn't lead to a happy society. It doesn't lead to a peaceful society. And of course, King Ashoka was relying on principles that the Buddha himself laid down in so the Buddha didn't just say teach meditation and tell people to attain. He told people to live skillfully in the world. He told people how to say rulers how to rule and take responsibility for the duties of being a ruler, and whether it was say at that time in India there were two main types of leadership or state leadership, in the sense of monarchies and republics is a good for those when he was living or teaching in states that were ruled by a monarch, he would talk what are the duties of a monarch, and in those states that were ruled by through our participatory, you wouldn't call it a democracy, but it probably maybe but a nascent democracy and a republic, and what were the duties of how to participate in that. So that's having these different duties and realizing that, say particularly in Indian history and probably in world history, there probably has never been a ruler as benevolent and grounded in Dhamma principles as Ashoka. So we had
an interesting afternoon. लुंगपुर में बता रहे हैं कि आज दोपहर बाद का जो कार्यक्रम था उस कैसा रहा। बता रहे हैं कि हम लोग दोपहर बाद नेशनल म्यूजियम गए थे और वहाँ पे भगवान की रेलिक्स देखे, अस्थियाँ देखी और उनकी एक पूजा करने का मौका मिला। वहाँ बैठ के हमने चैंटिंग किया, ध्यान किया। भगवान ने खुद ही कहा था कि अपने परिनिर्वाण के बाद कि किस तरह से स्तूपा बनाने चाहिए, और वहाँ पे वो कोई पूजा उस सेंस में नहीं, वर्शिप की सेंस में नहीं थी, लेकिन एक याद करने के लिए, रिकलेक्शन के सेंस में कि इतने वर्ष हो गए, 2561 वर्ष होने के बाद भी हम उनको याद कर पाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा रिकलेक्शन का कोई तरीका ना हो तो बहुत आसानी से हम ये चीज़ें भूल सकते हैं, और जो हमारा भूतकाल है उसको भी हम ठीक तरह से समझेंगे, देखेंगे तो उससे लाभ होता है। अगर हम ये जनरल बात करेंगे, जैसे करें पुराने दिन बहुत अच्छे थे, गुड ओल्ड डेज, और तो उस तरह से कोई उसका लाभ नहीं होता। लेकिन अगर हम उनके पुराने दिनों में जो स्पेशल महानुभाव रहे हैं, उनकी अच्छी क्वालिटीज़ थी, अच्छे उनके विचार थे, तो उसको याद करने से बहुत मोद जागता है, बहुत अच्छा लगता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है। और वहाँ पे हमने कई तरह के आर्टिफैक्ट्स भी देखे जो कि भारत की इतिहास के अलग अलग पन्नों को बताते हैं, किस तरह पुराने समय में हुआ। लुंग पर कह रहे हैं कि मैं कनाडा में पैदा हुआ था और वहाँ की कोई ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री नहीं है, और वो कहते कि 20 साल तक मैं कैलिफोर्निया में रहा और वहाँ की भी हिस्ट्री कुछ खास नहीं है। वहाँ पे जहाँ वो पिंडपात के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक दुकान है तरह से। हमारे यहाँ भारत में प्राचीन क्या तात्पर्य है, कितना भारी फर्क है। भारत की जो हिस्ट्री है, इतनी अलग अलग तरह की, अलग अलग कालों की हिस्ट्री, वहाँ पे थोड़ा सा देखने का समय मिला। तो उसको, हिस्ट्री को देख के किस तरह से देखें, स्किलफुल वे से कैसे उसको देखें, ये हमको पूजा से कर इमेज रखी हैं बोधि ट्री की और भगवान की, वो सब एक तरह से रिमाइंडर हैं बुद्ध धम्मा संघा के। और बंते जी कह रहे थे कि मेरे को तो बहुत ही इंस्पायर करता है। आप किसी को करता है कि नहीं मालूम नहीं, बट उनको कहते हैं कि बहुत इंस्पायर करता है वो सबका। सुबह अपने उठने के बाद उस तरह से दिनचर्या शुरू करना, और वो एक तरह से एक कुशल तरीका है, कुशल उपाय है, हम किस तरह से अपना ध्यान आकर्षित करते हैं इन बस पुराने पास्ट के ऊपर, भूतकाल के ऊपर कैसे ध्यान आकर्षित करते हैं। फिर हम लोग अशोकन पिलर गए थे, तो फिर उसके बारे में बंते जी बता रहे थे कि वहाँ जाके हमने कोशिश की समझने की कि उस पिलर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। वो सब हमने पढ़ा, जो वहाँ पे अशोकन एडिक्ट्स थे, तो उसको पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा राजा हुआ जिसने धर्म के सिद्धांत के अनुसार से समाज को बनाने का प्रयास किया। अपने मंत्री लगाए, अमात्य लगाए, अपने सिविल सर्वेंट रज्जुकाज लगाए, जो कि अपनी प्रजा को ठीक तरह से उनका देखभाल करें और उनको धर्म में प्रतिष्ठित करने में सहायता दें। तो बंते जी कह रहे थे कि वो बहुत ही प्रेरणादायक रहा, बहुत इंस्पायरिंग रहा कि किस तरह से एक राजा बहुत धर्मानुकूल राज्य कर सकता है। आजकल तो मॉडल जो हम लेते हैं इकोनॉमी के और गवर्निंग के, सब पाश्चात्य मॉडल हैं, उनमें कोई ज़्यादा इंस्पिरेशन की गुंजाइश नहीं रहती। वो बहुत सुंदर मॉडल नहीं है और ना ही वो सबके खुशी का लगते हैं। लेकिन अशोका के जो उनके एडिक्ट्स थे, उनको पढ़ के तो ऐसा लगता है कि सचमुच में धर्म के आधार पर समाज हो तो किस तरह से सुख, शांति और समृद्धि फैल सकती है, किस तरह से संसार में स्किलफुली भी जिया जा सकता है, एक कुशल तरीके से जिया जा सकता है। कैसे कि कोई भी राजा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले प्रजा की,
और लुंगपुर बता रहे थे कि भगवान बुद्ध ने भी खुद इस तरह के काफ़ी प्रवचनों में जो राजा हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ के बारे में बताया। भगवान के समय पे दो तरह के स्टेट्स थे, एक तो मोनार्की मतलब राज्य तो थे, किंगडम्स थे, दूसरे रिपब्लिक्स थे जो कि एक तरह से कहें तो डेमोक्रेसी के जैसे थे, जहाँ पे चुनाव होते थे और रिपब्लिक्स बनते थे। तो दोनों के लिए क्या उनके ड्यूटीज़ हों, राजा का क्या कर्तव्य हैं, रिपब्लिक्स के लोग जो नेता लोग हैं, लीडर्स हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, भगवान ने खुद उसके बारे में काफ़ी गहन प्रवचन दिए हैं। तो इसीलिए क्योंकि समाज की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है कि जो राजा हैं या जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो धर्मानुकूल व्यवहार करें। और अगर हम विश्व की इतिहास भी पढ़ते हैं तो पाते हैं कि शायद ही कोई ऐसा राजा रहा हो जिसने धर्मानुकूल राज्य करने का प्रयास किया हो, इतनी बेनेवोलेंट राज्य हो, इतना उसने धर्म के अनुसार जीने की कोशिश की हो। तो समरी में भंते जी कह रहे थे कि बहुत अच्छा है कि इंटरेस्टिंग आफ्टरनून हमारा रहा, काफ़ी रोचक और प्रेरणाप्रद दोपहर बाद का समय बीता। Okay, so open it up प्रश्न हो for तो पूछ questions. सकते हैं। Respected sir, when Buddha was born, it was told that he will be a great sage in future. Like he was said that he will be a great king or great sage in future. Is everyone's destiny already decided with their karmas? And does karma have its role in life? And if anything good happens, they say it's good karma, and if anything bad happens, they say it's bad karma. Does awareness help to change destiny in life? Like awareness changes destiny or any karma? Okay. A lot of things to pick apart there. But that aspect of karma, I mean, probably good to recognize that there's, say from Buddhist perspective, the sense of, I mean, there's karma is the verb to do, so it means action. So any action of body, speech, and mind is karma. And then the results of karma are what is called karma vipaka. So the fruits of karma, the results of karma. So that whatever action there is an result. It's quite normal. It's just a law of nature. And there's as a general rule of thumb, there is when one say good actions produce a good result, a bad action produces a bad result. But then it gets complicated in the sense, how do you say what's good and what's bad? Oftentimes, like in Thai, in Thai there's an idiom that comes from the Dhammapada saying, it's sort of like, you do good, you receive good, you do bad, you receive bad. And then, but then, said, well, usually it's sort of saying, how can that be? How can that be? It says you do good, you receive good, and do bad. So I see people, doing bad things, and they get rich and famous, and but that's not really a good measure for the results of, because people, we tend to when you measure it from a worldly sense, then you look at the results of what is popular or valued at a cultural time. And
and Ajahn Chah used to say that it's important to measure it more in terms of the intrinsic qualities, like when you do a good action, in the sense of wholesome action, skillful action. One is increasing the possibility that that's what one would continue to do and continue to receive, to be associated with, so that one is creating a habit that is skillful, that's wholesome, it's beneficial. Similarly with unskillful action, and whether one gets praise for it or blame for it, or gets some reward or get some kind of adverse effect come from, those are much more around worldly values or different circumstances that may or may not happen. So it's like when the Buddha, in the Dhammapada saying that the Buddha uses, when you do good, you receive good. He said, in the same way that as you plant a seed, the plant will grow from that seed. Whatever kind of seed one plants, so that if you plant a mango seed, you're going to get a mango tree. You plant an apple seed, you're going to get an apple tree. But sometimes you plant mangoes, and you don't always get a good crop. The tree doesn't always live forever and give fruit all the time. So that's dependent on all sorts of other conditions. But you plant that mango seed, and you still get a mango tree. So in the same way that when we do something good, that good is still there. But again, whether in the society or the culture somebody praises you for it, or you get blamed for it, or you like sometimes in just being generous or kind, and in some aspects of the culture, people say, "Oh yeah, that's really praiseworthy," and other people look, "Wow, what a dummy!" Why do you? So that, but still, that goodness is fundamental. In the same way that when you harm somebody, you take advantage of somebody. In some aspects of the culture, some people say, "Wow, he's a really clever businessman," but it's still something that is harmful. It's still something that is painful, both for oneself to have a memory of one having done that, and then the impact that it has on others, the sense of trust that is created, and the bonds of harmony that are either created or are broken, so that the actions have a certain intrinsic quality that we need to be paying. So karma is, it was very complex, and there's all sorts of layers and nuances. And is your destiny set to a certain degree, in the sense that we come into the world with a certain package, karmic package. We can still work on it in terms of improving it or changing it or shifting direction, or we can make some really dumb choices and do things which are detrimental to ourselves. So that a lot of it is
it comes down to choices that we do make, and how well we nurture our quote unquote destiny, and we can learn. The reality is we can learn from everything, because sometimes some people come into life with a lot of advantages, but still create a lot of suffering, and others come in with not much at all, and are able to lead really impactful lives, both for themselves and for others, and also just in terms of how how it unfolds. It really is not a sure thing, in the sense of how Ajahn Chah translates anicca. I'm not sure. I mean, these are aspects that we have to keep. You can't measure it just from say a worldly perspective, and say how much one gained, or how much fame one was a recipient of. So that sense of we can always change whatever we come into the world with. There's a certain trajectory that's in place because of past in this past causes and conditions, but it's also something that is it's an ongoing work project. That's what samsara keeps going round and round. We keep working at it. आपने प्रश्न पूछा था कि भगवान बुद्ध जब पैदा हुए थे तो कहते हैं कि उनके बारे में प्रेडिक्शन किया था कि वो तो या चक्रवर्ती राजा बनेंगे या बुद्ध बनेंगे। तो क्या ऐसा है कि हमारे सबके जन्म के समय डिसाइड हो जाता है कि क्या होने वाला है? डेस्टिनी सबकी, भाग्य सबका निर्धारित रहता है? कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिले, अच्छी डेस्टिनी होती है, बुरे करो तो बुरा मिलती है। तो क्या अगर हम अवेयरनेस से जिए तो क्या हम अपना जो भाग्य है बदल सकते हैं? तो ये प्रश्न था। उत्तर बंते जी ने दिया कि हमें पहले तो ये समझना चाहिए, कर्म जो है एक वर्ब है, एक क्रिया है, ना कि कोई संज्ञा है, एक चीज़ है कि कोई नाउन है। मतलब क्या हम कैसे करते हैं, वो एक्शन की बात करते हैं। कर्म का मतलब है एक्शन। जैसे कि हम मन से, वाणी से, शरीर से क्या कर्म करते हैं, तो उसका मतलब क्या एक्शन करते हैं। जनरल जो प्रिंसिपल है, कर्मा प्रिंसिपल का यही है कि अगर कुशल कर्म करेंगे तो अच्छे फल आएंगे, और कुशल कर्म करेंगे तो बुरे फल आएंगे। ये जनरल प्रिंसिपल तो हमेशा सत्य रहेगा। अब क्या अच्छा कर्म है, क्या बुरा कर्म है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें, आयाम जुड़ते हैं। भगवान ने धम्म पद में कहा भी है, जिसको संक्षेप में कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। लेकिन कई बार हमको विस्मृत हो जाते हैं, अजीब सा लगता है, अचानक भ्रम होने लगता है कि कुछ लोग तो बहुत गलत काम करते रहते हैं, फिर भी वो बहुत अच्छे अपेरेंटली सुख से जी रहे हैं, बड़े सुख सुविधा से जी रहे हैं, और दूसरे लगता है कि अच्छे काम करने के बावजूद भी वो दुख में जी रहे हैं। तो वो बताते हैं बंते जी कि ये इस समय क्या दिख रहा है वो एक अच्छा तरीका नहीं है जानने का। अजान चाह कहा करते थे कि वो जो इसकी इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ हैं, क्या उस किसी भी कर्म के पीछे क्या इंटेंशन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि डिटरमिन करने के लिए कि एक एक्शन जो है कुशल है कि अकुशल है।
तो अगर हम इस समय कुशल कर्म करेंगे तो उससे कुशल कर्म करने की आगे की आदत हमारी और पुष्ट होगी, और वो भी कुशल कर्म भी ऐसे करें कि चाहे हमारी प्रशंसा हो या कोई हमको बुरा भला कहे, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हम कुशल कर्म करते रहेंगे तो सचमुच में हमारा जो भविष्य है वो बदल सकता है। और जो सांसारिक मूल्य हैं वो ये सब बातें उनसे भिन्न हैं, और इसको वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे अलग अलग होती हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत जो है वो तो स्टैंडर्ड है कि भाई जिस तरह का बीज बोएंगे उसी तरह का फल आएगा। कि अगर आम का बीज बोएंगे तो आम का ही फल आएगा, सेब का बीज बोएंगे तो सेब का ही फल आएगा। लेकिन ये बात भी है कि आम का बीज बोने के बाद ये ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे फल आएँ, क्योंकि कई और कंडीशंस भी हैं जो ये बात डिटरमिन करती हैं कि फल कैसे आएंगे। लेकिन ये निर्धारित है कि आम बोएंगे तो आम ही आएगा, उसमें कांटे नहीं आएंगे। कम आए या ज़्यादा आए, वो कम और ज़्यादा होना दूसरी कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। जो भी हम काम दान का करते हैं, जनरॉसिटी का एक्शन करते हैं, तो वो सामान्यतः उसकी प्रशंसा होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लोग उसकी हमेशा प्रशंसा करें। उसको उनको देखने का नज़रिया भिन्न हो सकता है। इसी तरह कोई अगर अब किसी का नुकसान भी करता है तो हो सकता है कि उसकी प्रशंसा हो कि देखो कितना अच्छा बिजनेसमैन है, उसने अपना धन की बहुत वृद्धि कर ली, और वो उसके कारण जो दूसरे का नुकसान हुआ उसकी ओर ध्यान नहीं जाते। लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर हम कोई अकुशल काम करेंगे, चाहे उससे हमारी धन की वृद्धि हो, फिर भी वो अंततः हमको दुख ही देगा, क्योंकि वो बात हमारी मेमोरी में रहेगी, याददाश्त रहेगी कि हमने ऐसा कुशल काम किया था। तो जो कर्म सिद्धांत है वो इन वर्ल्डली वैल्यूज के कारण निष्फल नहीं होता, गलत नहीं होता, क्योंकि दूसरे कंडीशंस भी हैं। मंत्री जी कह रहे थे कि कर्म बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसमें कई सारे आयाम हैं, कई सारी चीज़ें उसमें जुड़ती हैं। ये बात जहाँ तक डेस्टिनी की बात है, भाग्य की बात है, तो लुंग पोर ने कहा कि कुछ हद तक तो ये सत्य है कि जो हमारा कर्मिक पैकेज है, जो हमारे कर्मों का संचय कर्म है, उनके कारण काफी जो हमारा एक भविष्य है वो कुछ हद तक निर्धारित होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम बदल नहीं सकते। अगर हम ठीक से काम करें, सजगता से जिएं, तो उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। लेकिन अगर हम गलत चॉइस करेंगे तो वो हो सकता है और बिगड़ जाए। तो किस तरह की हम चॉइस करते हैं अपने जीवन में, कुशल कर्मों की या अकुशल कर्मों की, कुशल इंटेंशन की या कुशल इंटेंशन की, उससे भी हमारा जो भविष्य है वो बदल सकता है। हम इस बात को जैसे सामान्य स्थिति में देखते हैं कि संसार में क्या कैसी परिस्थिति है, उससे भी समझ सकते हैं कि कर्मों का असर कुछ ना कुछ तो है ही। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कुछ लोग जो हैं बहुत सुख सुविधा में जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसे कर्म करते हैं कि उनको आगे दुख ही होता है। और कुछ लोग होते हैं जो अभाव में जीते हैं, सुख सुविधा में नहीं जीते, लेकिन ऐसे अच्छे कर्म करते हैं कि उनका आगे वृद्धि होती है, धर्म में वृद्धि होती है। तो मुख्यतः बंदे जी कह रहे थे कि हमको अजान चाह की वो बात याद रखनी चाहिए, अनित्य का जो एक एस्पेक्ट है, नॉट श्योर, कि पक्का नहीं है, अनिश्चित है, तो वो बात कर्म सिद्धांत के बारे में भी कहनी चाहिए। और हमको सांसारिक पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें नहीं नापनी चाहिए, क्योंकि हम अगर ये सोचेंगे कि मैंने कितना किया और फिर मुझे कितना उसका मिला, इस तरह से अगर नापतोल करेंगे तो फिर हम भ्रम में पड़ जाएंगे, संसार के चक्कर में संसरण करते रहेंगे। ये बात सच है कि जो भूतकाल के कर्म विपाक हैं उससे एक ट्रेजेक्ट्री हमारी बनती है, भविष्य कैसा होगा। लेकिन ये भी सत्य है कि हम एक प्रक्रिया एक ही बार सेट नहीं होती, ये निरंतर बदलती रहती है। जैसे जैसे जिस तरह के हम कर्म करेंगे अब इस जन्म में, उस हिसाब से हमारा भविष्य भी बदल सकता है। Something else that comes to mind with around Khamma is, of course, in the morning session, I talked about how Khamma is part of right view, but then also there's some discourses, a couple, I'm not sure how many, a few
that the Buddha takes the template of the Four Noble Truths and turns it around with Kamma and saying there is Kamma, there's the origin of Kamma, cessation of Kamma, path leading to cessation of Kamma. And so that you're using Kamma as a perspective of reflection and as a doorway into liberation and freedom also, and cessation. So it's just interesting. बंते जी हमको एक और बात ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि जो जैसे सुबह उन्होंने बताया कि कर्म जो है वो एक सम्मादिट्ठी राइट व्यू का भी पार्ट है, और आप बता रहे हैं कि कई प्रवचन ऐसे भी हैं, कुछ प्रवचन पिटका में जिसमें कि कर्म सिद्धांत के आधार पर 4 आर्य सत्यों की विवेचना की गई है कि कर्म है, कर्म का एक उत्पत्ति है, उसका समुदय है, कर्म का निरोध है और कर्म के निरोध का एक मार्ग है। तो जो 4 आर्य सत्यों की टेम्पलेट है वही दुख के लिए यूज की गई और वही कर्म के लिए यूज की गई। इसका मतलब ये कि बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है, अच्छा उसके ऊपर विचार किया जा सकता है, विवेचन किया जा सकता है। तो इससे भी हमको कर्म के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मिलता है। While others think about the question, I have 2 questions which I mentioned, which came in the morning session, but I couldn't ask them because we didn't have time. So one of our meditators has given this question, and she has said to again and again, with apologies to monks, she says that what do the monks do when they sit to meditate? Do they do breath work or body scan or watch the thoughts or work on sati? How do they approach meditation? Is it according to current state of mind or is there a specific method they follow? Okay. So they in general, or I'm not sure what all of them do. I know what I do. I'll speak for myself. For myself, my fundamental practice is based on the Anapanasati Sutta, so the mindfulness of breathing, but mindfulness of breathing as laid out by the Buddha, because that if you go through the discourses and the sutta teachings of the Buddha, then and you say, well, what method, what did he teach most often as a meditation technique or meditation practice? And mindfulness of breathing is the most common, most often taught practice that the Buddha gives. And of course there are many others that the Buddha advises and instruction that he gives on meditation, but mindfulness of breathing is the most frequent instruction that he gives. But in saying that, mindfulness of breathing is structured and step by step. In that, when the Buddha instructs it, they say that 16 steps of the cultivation of mindfulness of breathing, and it's based around the Satipatthana Sutta, so that it's 4 groups of 4, so that in terms of the attention on the body, feeling, mind, and mind objects, mind phenomena, and in conjunction with the breath. So those are it's a and when I say step by step, I don't mean in a linear or sequential way, but there are
different steps and different approaches that one can take using the mindfulness of the breath, and then attending to the experience of the body, the experience of feeling, the experience of the mind, and the experience of mental phenomena that one is gauging one's say one's training or one's development of this path of freedom from suffering. She has added some clarification, so I would read out for her. She must be listening, so she would, I think, feel satisfied. She said, basically my reason why I wanted is that how should we decide what should we do when we sit for meditation? On what basis should we decide? Does it depend on current state of mind, or there should be a specific order in which we should do this, we should do that, we should... The way to decide is whatever works. And that's, that's actually, I mean, it seems flippant, but it's actually really important in the sense that you're tuning into what is my experience and what is actually helping the mind to become more clear, more settled, more steady, and to be gauging that experience, and that's, I think that's the beauty of say the Buddha's approach to having these 16 steps, is that you've got options. You can come at the experience of developing the mind and developing that mindfulness of breathing from different approaches or angles, because sometimes you put effort into it a certain way and it's not working. Just the mind is not settling. But then that doesn't mean that it's hopeless and you failed. So what it means is you've got to learn how to adapt and adjust one's approach so that one is learning to respond skillfully to the state of mind, the qualities of mind that both is experiencing in the present moment, and then also what one is cultivating as in terms of into the future. एक प्रश्न एक साधिका ने पूछा था कि भंते जी से कि आप लोग जब बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो क्या आप सांस पे काम करते हैं या शरीर को बॉडी स्कैन करते हैं या विचार देखते हैं या सती प्रतिष्ठित करते हैं, क्या जो मन की इस समय स्थिति है उसके हिसाब से करते हैं? तो भंते जी ने कहा कि मैं जनरली क्या करते हैं तो नहीं कह सकता, मैं खुद क्या करता हूँ बता सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि वो आनापान सती का अभ्यास उनकी फंडामेंटल प्रैक्टिस है, और जैसे आनापान सती सूत्र में बताई गई है, जो भगवान ने सूत्र डिटेल में दिया है, और वो देखते हैं कि भगवान ने जो कई सारे तरीके ध्यान करने के बताए थे, लेकिन उसमें से जो बहुत बार बार रिपीट किया गया एक बहुत महत्वपूर्ण वो बात आनापान सती थी। और उसके एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया गया कि 16 जो उसके आयाम हैं उनको कल्टीवेट किया जा सकता है, और उसी से 4 सतिपट्ठान भी हमारे परिपूर्ण होते हैं, जो काया का, वेदना का, चित्त का और धम्म का। तो वो सांस के साथ साथ ही सतिपट्ठान का भी काम होता रहता है, भगवान ने में ठीक से समझाया है। और जो एक एक स्टेप है वो ऐसा नहीं है कि लीनियर है कि पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे फिर वो करेंगे, ये अपनी समझ के हिसाब से हमको अलग अलग कंडीशंस में अडेप्ट करना होता है।
फिर उन्होंने अपने साधिका ने प्रश्न का आगे क्लैरिफिकेशन दिया था कि वो चाहते हैं कि वो किस तरह से डिसाइड करें कि वो क्या कौन सा स्थिति, कौन सी ध्यान की पद्धति अडॉप्ट करें, ताकि क्या वो इस समय मन की स्थिति जो है उसके हिसाब से डिसाइड करें। तो बंते जी ने जवाब दिया कि जो भी काम करे, ये लग सकता है कि बड़ा हल्का सा सुझाव है, लेकिन ये सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी जिस चीज़ से भी हमारा मन सेटल हो, समता में पुष्ट हो, वही हमको करना चाहिए। और भगवान की जो टीचिंग है उसमें भी यही, जैसे आनापानसति में इतने सारे आयाम हैं, तो अगर हम कोई एक तरह के ध्यान कर रहे हैं और वो एक बार काम नहीं कर पा रहा है हमारे से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम हमारा साधना नहीं हो रही। उसका मतलब ये है कि हमको अडेप्ट करना चाहिए, हमको अपने साधना की पद्धति, जैसे इसमें 16 आयाम है, अगर एक आयाम नहीं काम कर रहा तो दूसरे से ट्राई करें। तो बेसिकली हमको अपने हिसाब से अपने जो भी काम करने, जो भी साधना का मार्ग हमें सूटेबल लगे, हमारे लिए काम करे, उसी पे हमें काम करना चाहिए। तो वी शुड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड स्किलफुली टू द स्टेट ऑफ द माइंड। जैसी हमारी मन की स्थिति है, उसको किस तरह से उसके हिसाब से ध्यान की पद्धति चूज करें, वो एक कुशल तरीका हमको आना चाहिए। और वो अभ्यास करते, जैसे जैसे हमारा अभ्यास पुष्ट होता है, वो धीरे धीरे वो बात समझ में आने लगती है। In the Buddhist teaching, there's a couple words that are quite important to get a feel for, because when we translate it into English, it's kind of flat, kind of falls flat. So the words are kusala and akusala, and so kusala is often translated as wholesome, skillful, bad, or rather a good, and then akusala is unwholesome, unskillful, bad. But there's a range of, it has a broad range of meaning, so that something that is kusala, we experience that as, say, the mind is in a state of well-being, happiness, clarity, stability. Some discernment is there in terms of there's an intelligent application of the mind. So it's all kusala, and akusala is its opposite, in the sense of the mind's kind of unhappy, it's clouded, it's agitated, it's not steady, it's not making good choices. So that when the Buddha said, when I say okay, whatever works, the Buddha's definition of what is working is when kusala qualities, kusala states of being increase and akusala decrease. And when something's not working, it's not appropriate, it's that akusala is increasing and kusala is decreasing. So that's a point of reflection that one has to make, and also in terms of working with the mind, working with the practice, then paying attention to these nuances of, well, how is the mind responding? Because sometimes say we can experience something that is pleasurable, and kusala can arise or can increase, or akusala can arise. So we can experience something pleasant, and say like and then
respond to it with a certain skillful response, and we grow from it, we learn from it. But we can experience something pleasant, and it stimulates desire or even jealousy or something. It wasn't as good as the other person, even though it was pleasant. It wasn't as pleasant. I'm sure that somebody got better than me. We can complicate things so much. We can experience something that's unpleasant or difficult, and we can really learn from it, and it brightens the mind. Or we can experience something that is, say, unpleasant or difficult, and then it can overwhelm us, or we can get averse or resentful of it. So it's being able to reflect and investigate. Okay, what am I experiencing? How am I experiencing? And what do I want to develop? There's what also comes to mind is a teaching of the Buddhas where, like there's two. The Buddhas say there are two responses to dukkha, and one is more dukkha, or a noble search, and it's actually very beautiful where one experience, because sometimes we think in terms dukkha as an obstacle, as almost as an enemy, and that's where, if we do that, then of course we'll experience more dukkha, because it oppresses one, or it just confuses one. But it's all the opposite is possible as well, where it's a catalyst for this sense of rising to the occasion and this noble search. This opportunity, one recognizes the opportunity for growth and development, and that wholesome qualities arise of it. The skillful kusala increases. बंते जी ने आगे बताया कि भगवान की टीचिंग में कई चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में दिक्कत हो जाती है, जैसे कुशल और अकुशल की बात। फॉर्चुनेटली हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हमको कुशल अकुशल सामान्य आराम से समझ में आता है, क्योंकि वो शब्द हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं और हमको उसका आइडिया है कि कुशल का मतलब क्या है और अकुशल का मतलब क्या है। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो बंते जी बता रहे थे कि कुशल का मतलब है कि उस तरह की चित्त की स्टेट हो, मेंटल स्टेट हो, जिससे कि मन प्रसन्न हो, एक स्टेबिलिटी हो, ठीक तरह से हमारी चॉइसेस हो सकें, हमारी प्रज्ञा सामने प्रतिष्ठित हो, तो वो कुशल है। और अकुशल है जो इसका अपोजिट है, जिसमें कि चित्त भी बहुत दुखी है, परेशान है, हमारी प्रज्ञा भी आच्छादित हो गई है उस दुख से, और मन भी बेचैन हो रहा है, स्टडी नहीं है, और हम चॉइस भी ठीक से नहीं कर पाते। तो जो बेसिकली हिंदी में कुशल और अकुशल का अवधारणा है, बंते जी कह रहे हैं कि उसको अगर हम ठीक से समझें, उसकी विवेचना ठीक से करें, तो हम यही कि जब कहते हैं कि यू डू वट एवर वर्क्स, उसका मतलब यही है कि जिस तरह से ध्यान साधना करने से हमारी कुशल प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, मन की कुशल मन की चित्तवृत्तियाँ बढ़ती हैं, तो वो हमारे लिए काम कर रहा है, और अगर अकुशल बढ़ रही हैं तो वो काम नहीं कर रहा है। और ये हमारे लिए एक विवेचना का संबंध है, इस पर रिफ्लेक्शन करना चाहिए। तो कभी भी हमको प्रिय परिस्थिति है कि अप्रिय अनुभव है, उसके आधार पर निर्धारित नहीं करना चाहिए कि कैसी साधना करें, क्योंकि प्रिय अनुभव भी हो, प्लेजेंट अनुभव भी हो, तो उससे अकुशल भी हो सकता है, कुशल भी हो सकता है। अगर हम उसको ठीक से रिस्पॉन्ड करें तरीके से, तो वो कुशल हो सकता है।
लेकिन अगर हम उससे अपनी इच्छाएं बढ़ाएं या दूसरे से ईर्ष्या करने लगें कि देखो अच्छा तो हुआ लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ जैसे किसी और का हुआ, तो उससे हमारा अकुशल मन की चित्त वृत्तियां ही बढ़ती हैं। तो ये इसी तरह से अगर अप्रिय परिस्थिति आती है और हमको बिल्कुल ओवरवेल्म कर लेती है, हमको बिल्कुल लोट पलोट उसी अप्रिय परिस्थिति में लगाते हैं, तो उससे हमारा मन और बेचैन होता है, तो अकुशल की प्रवृत्तियां ही बढ़ती हैं। लेकिन अगर हम उससे कुछ सीखने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें, तो वो कुशल प्रवृत्ति के रूप में, कुशल मन की स्टेट के रूप में प्रकट होता है। बंदे जी ने एक भगवान का एक प्रवचन है उसका उदाहरण किया, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो दुख का अनुभव है उसके दो तरह के रेस्पॉन्स हो सकते हैं। एक ऐसा रेस्पॉन्स जिसमें और दुख बढ़ जाए, दूसरा ये रेस्पॉन्स कि उसके आधार पे हम अन्वेषणा करने लगे, हम ढूंढने लगे कि क्या कारण है दुख का और किस तरह से हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो उसी परिस्थिति से, दुख से ही हम और दुख बढ़ा भी सकते हैं और दुख मुक्ति की ओर बढ़ भी सकते हैं। ये सब तो जो जिस तरह से हमको दुख मुक्ति की ओर चले वो साधना ठीक होगी, और जिससे दुख बढ़ रहा हो वो उचित नहीं होगी। क्यों कई बार हम समझते हैं कि दुख जो है हमारी साधना में बाधक है, ये सच नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम ये समझते हैं कि दुख की परिस्थिति हमारी साधना में बाधक है, तो उससे हमारा दुख और बढ़ता ही है, तो वो अकुशल मन की चेतनाएं वृत्तियां बढ़ती हैं। लेकिन अगर हम उस दुख की परिस्थिति को समझने का प्रयास करें एंड वी राइज टू द ओकेजन कि हाँ देखें क्या हो रहा है, और इस परिस्थिति को, दुख की परिस्थिति को मैं एक कुशल प्रवृत्ति के रूप में ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो उससे हमारा साधना भी उसी अनुरूप करें तो वो लाभकारी होगी। How does one remain on the path of Dhamma when one is facing turbulence in one's life? What was that again? How does one remain on the path of Dhamma when one is facing turbulence in one's life? Oh, that's the time to really I mean, a lot of it is a sense of, this is where the quality of faith or confidence is important. Like when the Buddha speaks of the different types of say spiritual faculties to be cultivating, say like faith, saddha, or effort, really sati and mindfulness, samadhi, meditation, panya, wisdom. Sometimes when there is turbulence and there's, everything is sort of upside down, then that quality, this is where faith is really important, because sometimes you can't think yourself through a period of difficulty. You have to rely on that sort of confidence, and so that cultivation of saddha, faith is not a great word in the English language, and in the say from a Judeo-Christian background or perspective, or from a theistic perspective, it's not really a great quality to rely on, because it tends to be blind faith. But maybe confidence is sort of a good word. Courage is maybe a good word in the sense of having because it's more, there's more of a devotional quality there, and a say an acceptance of certain principles without having to rely on thinking it rationally, analyzing it.
So that faith is an important quality. So in times of turbulence, all the rest of them you still have to rely on, but it's that quality of faith that gives an impetus or momentum that helps one get through periods of difficulty and periods of turbulence where, say, samadhi, peaceful, tranquil, meditative states aren't accessible, or there's a lot of turmoil. It's hard to establish mindfulness, or the effort or energy is sort of kind of our energies are all over the place. And so that cultivation or that directing attention to the things that one has faith in, and that's why for the very first, was that only yesterday? Very first instruction that I gave was about the refuges. So refuges of traditional refuges for a Buddhist are the refuges in Buddha, Dhamma, and Sangha, and those are objects of, they're objects of contemplation, but they're also objects of faith, of confidence, of a sense of there's a certain uplifting quality that comes to the heart when one directs one's attention to the refuges. So that uplifting quality is really important. आपने प्रश्न किया कि जब जीवन में बहुत उथल पुथल हो रही हो तो ऐसे समय पे कैसे हम धर्म के मार्ग पे स्थित रह सकते हैं। बंत जी ने कहा कि वही तो एक्चुअली समय है जब हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए उस टर्बुलेंस से निकलने का रास्ता बनाता है। और इसके लिए श्रद्धा का जो बल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बता रहे बंते जी ने बताया कि 5 जैसे इंद्रियां हैं जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, श्रद्धा की, वीर्य की, सति की, समाधि की और पन्या की। तो इसमें सबसे पहले श्रद्धा की रखी गई, क्योंकि वो हमको ऐसी परिस्थितियों में बहुत मदद करती है। जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है तो उस समय हम अपने विचारों के आधार पे उस परिस्थिति से नहीं निकल सकते, क्योंकि और वैसी स्थिति में श्रद्धा की बहुत महत्व है, क्योंकि वही अगर हमें कॉन्फिडेंस है अपने पाथ पे, जैसे बंते जी ने कल हमें बताया था बुद्धा धम्मा संघा में शरण रहना, रिफ्यूजेस इन दैट, तो उसका एक आयाम तो है कंटेम्पलेशन का, उस पर विवेचना का, दूसरा आयाम उसमें श्रद्धा का है, कॉन्फिडेंस का है, विश्वास का है। तो जैसे अगर हमें उस पर विश्वास है तो वो हमको एक संबल बनता है, एक एंकर बनता है, ताकि हमको हर चीज़ अपनी बुद्धि के हिसाब से, रैशनैलिटी के हिसाब से एनालाइज और समझने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब मन बहुत उथल पुथल में है तो रैशनैलिटी इज़ नॉट अवेलेबल, हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग का फैकल्टी है वो नहीं अवेलेबल रहता, क्योंकि मन बहुत बेचैन है। ऐसी परिस्थिति में जो श्रद्धा का बल है वही हमको आगे बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि उस समय हम चाहें कि हम समाधि का अभ्यास कर पाएँ, हम बहुत शांत मन की स्थितियों का अनुभव कर पाएँ, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उथल पुथल हो रही है। तो उस समय जिस तरफ जिसकी भी प्रति हमारी श्रद्धा है उसकी ओर अगर हम ध्यान आकर्षित करेंगे तो हमारा एक बल मिलता है, साधना का बल मिलता है, और उसकी एक एबिलिटी है कि हमारे चित्त को उठाती है, जो कि चित्त कुशल डायरेक्शन में जा रहा था उसको ऊपर ले आने की कोशिश करती है, और चित्त जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, तो फिर धीरे धीरे बल मिलता है श्रद्धा का, और उस बल के आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं। Can I hold the question for? Yeah, just that set of principles that you just said, like there's a certain set of principles, you use the term. I'm not very clear, what did you mean by that?
can't even remember what I said. Yes. Said No, you mentioned about the 5 faculties. No? Oh, 5 faculties. Oh, yeah. I mean, these are these are spiritual faculties, indriyas. So that those, but these are, say, principles of or qualities that we turn our attention to or develop and rely on. Okay. Yeah. आपने पूछा कि वो जो आपने प्रिंसिपल्स बताए थे वो क्या हैं, तो वो बता रहे थे कि जो श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि वगैरह की बात है, वो एक हमारी फैकल्टीज़ हैं जिनको डेवलप करने से जो क्वालिटीज़ हैं वो कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो बेसिक क्वालिटीज़ हैं जिनको कि हम भावना उनकी कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं और वो हमारे साधना में मदद देती हैं. Okay, can we take the opportunity to sit meditation? So I have just one question hanging. One question hanging? Okay. So I'll just close that so that it doesn't get lost with me. Okay. We don't want to leave it hanging. This will be the last badly. question. Bandeji mentioned about getting bored, and that's what I feel quite often. When I meditate, I feel very monotonous, and therefore boredom and restlessness comes up. How to fight this? Well, I mean, that's I mean, just in terms of the question, Yeah. There's the experience of boredom, and then there's I need to fight it. You've already set yourself up for frustration, which you'll try to escape that through distraction or just being more bored again. So, it's important to pay attention to how we respond. And because when we do something that is repetitive or is neutral, that tends to be against the grain, against our habitual tendencies, because we want to have something stimulating, or we get drawn into something that's a bit stronger, say like something that's desirable, or something that's irritating. At least our mind is able to hold on to it. But something like, the sensation of the breath coming in and out of the body is sort of like, give me a break. Just give me something else to do. So we get bored. But that's where one of the say spiritual qualities or aspects of practice is learning how to lift up this aspect of interest, and so learning how to take an interest, because usually what's happening when we meditate, oftentimes what happens is we have our object, and we put our attention on the object, and then we wait for the results to come. and you're going to get bored doing that, because you're sitting around waiting for, it's like the Samuel Beckett play, waiting for Godot. I mean, it just doesn't happen. So that learning how to lift up the mind to take an interest in and engaging in the object of attention. And so that's an inner quality that we're having to cultivate, and sometimes we have to lift up something that makes it interesting
on an external level, so that we pay, say, maybe closer attention to the sensation of the breath, or we lift up a quality of reflection in terms of, okay, is this taking a framework of, is this dukkha? Like taking the framework of the Four Noble Truths. Oh, I'm bored. Well, I think that's probably what the Buddha calls dukkha. And so okay, that's an experience of dukkha. Where is that coming from? What's its cause? And of course, then you come back to the template of the Four Noble Truths. The Buddha, how did the Buddha, where did he say that came from? So okay. Different forms of desire, kama tanha, bhava tanha, vibhava tanha. So that sort of recognizing how those different impulses of desire affect the mind. So that sense of wanting to be gratified, in some way, that search for gratification, it gets tiring, and then one gets bored. Or that sense of bhava tanha, I want to be a good meditator. I want to experience states of mind that are refined and special. That's there's a bhava tanha, or vibhava tanha. So I'm just fed up with all this. And so then that recognizing those impulses of desire, and how that, but taking an interest in it, then you start to recognize these patterns, and then you start relinquishing and letting go, and then you come back to the breath, and then the breath is you've refreshed your mind with this skillful quality of attention, and then you start to be able to stay with the breath. So you're using the sensation, not just trying to plunk your mind on it and force it to stay there, but working with it and modulating attention so that it's the mind is willing to take an interest in it. This word chanda, I translate it as interest, but it's more commonly translated as desire. So that the aspect of, and you think, practice, the purpose of the Buddha's teachings is to free the mind from all desire, but there's different forms, like the tanha is desire, but tanha is always associated with greed, hatred, and delusion, always going to end up in dukkha. Chanda is one of the qualities that it's in the 37 wings to awakening, Bodhipakkhya Dhamma. These are sets of teachings that the Buddha gave. It's in the teaching on the Iddhipadas, the basis of spiritual success. And the very first one, chanda, the desire. Chanda as desire is also, it can be unskillful. In say, like the first hindrance is kama chanda, so sensual desire. Okay, that's unskillful. But most often, when it's unqualified, it's a positive desire, a wholesome desire, a skillful desire. It can also be qualified wholesome, like dhammachanda, desire for the Dhamma. The kusala chanda, desire for the wholesome. These are skillful desires, but generally that quality of desire has maybe motivation is a better word. Sometimes you have to play with
translations to sort of get a feel for what the Buddha is pointing to, like that. How do we motivate ourselves? And it's important to be reflecting on that, because this is boring if you're just waiting to be enlightened. And there's no, as I say, the path of liberation is not through being bored into liberation. This doesn't work. And it's a long time ago. I came across a New Yorker cartoon, and it's a cartoon picture of two rough characters, sitting on a park bench, looking kind of scruffy and dirty. A couple of empty bottles of alcohol sort of down beside them, and one of them says to the other, "Let's face it, Sid, not having been born great, nor having achieved greatness, one can only assume we'll have it thrust upon us." That's really, and that's, not having been born liberated, not having achieved liberation, one can only assume it's going to just happen. Well, that isn't how it works. We really have to figure out the tools and how to apply these teachings, how to really internalize the aspects of motivation and skillful application. जो प्रश्न था वो था कि साधना करते करते बहुत कई बार बोर हो जाते हैं, तो उस समय ध्यान करने का मन नहीं करता, तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह से हम उस बोर्डम से युद्ध कर सकते हैं, हाउ टू फाइट द बोर्डम आउट। तो उन्होंने पूछा कि आप कृपया, और जो रेस्टलेसनेस होती है उसको कैसे उससे युद्ध किया जाए और उससे जीता जाए। तो बंते जी ने जवाब दिया कि ये जो एटीट्यूड है लड़ने का, फाइट करने का, ये एक अप्रोप्रिएट एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक बात है कि जब हम कोई काम बार बार करते हैं जो हमारी सामान्य आदतों के विपरीत है, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। हम को इंटरेस्ट उन चीज़ों में आता है जो कि हमको बहुत उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, बहुत उसमें स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है इंद्रियों पे, और उसको तो हम उसके ऊपर तो ध्यान हम लगा सकते हैं, चाहे कई बार वो प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, तो अप्रिय भी हो तब भी वो हमारे मन को उसके ओर ध्यान लगाना सहल होता है। लेकिन सांस आ रहा है, जा रहा है, और उसकी जो फीलिंग है वो सब न्यूट्रल है, तो उसके ऊपर अधिकतर समय तक मन लगाना मुश्किल होता है और बोर्डम होने लगता है। तो ये सामान्य बात है। तो लेकिन हमको सीखना पड़ता है अपनी जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं उनमें, कि किस तरह से हम अपना इंटरेस्ट बनाए रखें, किस तरह से इस साधना करने में जो ये क्वालिटीज़ आए इनको इस तरह की जो परिस्थितियाँ आए उनको ठीक से समझें, उसको ठीक से इन्वेस्टिगेट करें, और इन पर अटेंशन देने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति को। उसको ठीक से देखेंगे तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा। और उसके लिए उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट लेना मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा अटेंशन का, उसके लिए आंतरिक जो क्वालिटीज़ हैं वो हमको पुष्ट करनी पड़ती हैं, ताकि हम अपने मन को जो बोर हो रहा है उसको ऊपर उठा सकें और वो इस काम में इंटरेस्ट ले सकें। और कई बार ऐसा होता है कि अगर साधना में आनापान कर रहे हैं और उसमें मन बोर लग रहा है, तो वो अगर हम उस समय रिफ्लेक्शन करने लगें तो उससे भी कई बार धीरे धीरे हमारा
छंद जो है स्ट्रांग हो जाता है। उसके लिए लुंगपुर बता रहे हैं कि जो 4 आर्य सत्यों का फ्रेमवर्क है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो बोर्डम है वो भी एक तरह के दुख का ही अनुभव है। और अगर हम 4 आर्य सत्यों का टेम्पलेट लगाएं तो अगर दुख है तो उसका समुदय भी होगा, उसका कारण भी होगा। तो हम समझ सकते हैं कि कोई ना कोई तन्हा है जिसके कारण, या तो काम तन्हा है या भव तन्हा है, विभव तन्हा है, जिसके कारण ये सब हमारे जो दुख का अनुभव हो रहा है। और उसकी इन्वेस्टिगेशन करके 4 सत्यों के हिसाब से दुख को समझने की कोशिश, जैसे कहते हैं भगवान बताते हैं, उसको करने से बात हमें समझ में आने लगती है कि कौन सी तृष्णा हमारे को रोक रही है आगे बढ़ने में, और इससे धीरे धीरे चित्त जो बोर्डम में आ रहा था उससे बाहर निकलने की कोशिश कर सकता है। जो हमारा अनुभव है, जैसे 4 आर्य सत्यों के हिसाब से कि हमने अनुभव की दुख है उसको जान लिया, तो उसका क्या कारण है वो बात समझ में आ गई, तो फिर उसको हम उसके प्रति जो चिपकाव है उसको छोड़ सकते हैं। वी कैन लेट गो ऑफ इट एंड देन मन प्रसन्न हो जाता है और रिफ्रेश हो जाता है, और फिर से दोबारा से काम करने के लिए संभव हो जाता है। हमको ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए कि हमने सांस देख रहे हैं और मन, तो जो हमारी टेंडेंसी रहती है कुछ उपलब्धि प्राप्त करने की, उसके कारण भी बोर्डम बढ़ जाता है। कि क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोर होते होते एनलाइटन हो जाएं, ऐसी कोई संभावना नहीं। तो बंते जी ने छंद के ऊपर काफी जोर दिया कि इंटरेस्ट जो है या हमारी जो क्वालिटी है इस तरह की, उसको कई बार छंद को डिजायर के रूप में भी ट्रांसलेट किया जाता है। और डिजायर जैसे हम समझते हैं कुशल भी है और अकुशल भी है, तो अगर अकुशल होगी तो वो तन्हा के रूप लेगी। और खासतौर पर तन्हा और छंद में फर्क ये है कि तन्हा के बेसिस में हमेशा लोभ होगा या द्वेष होगा या मोह होगा, जबकि छंद में ये कुशल भी हो सकता है अकुशल भी हो सकता है। और छंद भगवान ने एक इद्धिपाद के रूप में माना है, जो हमारी स्पिरिचुअल सक्सेस है, जो हमारी साधना में सक्सेस है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है छंद का। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट होगा साधना में, हमारा तभी जाके हम आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए उसको 37 बोधि पक्षी धम्मों में भी छंद का उल्लेख आता है। बंते जी ने एक उदाहरण दिया, एक नेगेटिविटी अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा साधना में भी इंटरेस्ट जो है नहीं बन पाएगा। साधना में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए छंद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, और छंद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर हम रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करें और 4 आर्य सत्यों का टेम्पलेट इस्तेमाल करें तो बोर्डम से छुटकारा पाया जा सकता है। ये अंतिम प्रश्न था, तो अब हम ध्यान करेंगे।